Welcome to the part 3 of the video. Before we begin it, we have a sincere request. Please like, share and subscribe Exact IS on YouTube and follow us on Instagrams if you find our videos helpful and informative. अब आते हैं असली मुद्दे पे. Why has the constitutionality of abrogation of Article 370 been challenged? पहले Article 370 को एक बार देखते हैं. Article 370 कहता क्या है? इस आर्टिकल में 3 चीज़ देखने को मिलता है. नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर इंडियन पार्लियामेंट कोई भी लॉज नहीं बना सकता है एक्सेप्ट ऑन द 3 सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन, दैट इज डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन. नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 1 विच डिक्लेयर्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड आर्टिकल 370 आर द ओनली आर्टिकल्स दैट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन को एक्सटेंड करना है टू जम्मू एंड कश्मीर, देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू गिव एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 370 क्लॉज 3, जो कहता है दैट द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को नीदर अमेंड नॉर रिपील किया जा सकता है अनलेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेकमेंड्स इट. आर्टिकल 370 क्लियरली कहता है कि अगर इस आर्टिकल को अमेंड या हटाना है then the Indian government has to do it on the recommendation of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. But as you already know, JNK का Constituent Assembly 1957 में ही डिसॉल्व हो गया था. The central government इसलिए एक presidential order issue किया by which all provisions of the Indian Constitution were made applicable to Jammu and Kashmir. The Presidential Order 272 was issued in 2019, जिससे एक modification लाया गया to Article 367. आर्टिकल 367 एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करना है वो आर्टिकल 367 बताता है. अब इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज का आर्टिकल 367 क्लॉज 4 सब क्लॉज डी को यूज़ किया गया है टू इंटरप्रेट द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली in Article 370 Clause 3, stating that it must be read as legislative assembly of the state. इसका मतलब है इस अमेंडमेंट के बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन रेकमेंड कर सकता है. आर्टिकल 370 को डायरेक्टली अमेंड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 368 और इसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए इसे इनडायरेक्टली अमेंड किया गया है विदाउट पार्लियामेंट्स परमिशन. अब प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली. बट याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर तब प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर था. इसका मतलब इट हैड नो लेजिस्लेटिव असेंबली एट दैट मोमेंट. और आपको तो पता ही है कि अगर किसी स्टेट को आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर लाया जाता है, देन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट. Thus, the Parliament assumed the role of the Jammu and Kashmir State Legislative Assembly. Now, Parliament could recommend the President for the abrogation of Article 370. And this is what happened when the Rajya Sabha recommended the abrogation of Article 370 through a statutory resolution. Another presidential order 273 was issued to operationalize Rajya Sabha's recommendation. याद रखिएगा, आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया है. वो आर्टिकल अभी भी है, लेकिन उसका प्रोविजंस ऑपरेट नहीं करते हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 which was amended to state that the Constitution of India applies to the state of Jammu and Kashmir. Now there are 4 important issues before the Supreme Court. Number 1, क्या आर्टिकल 370 of the Indian Constitution एक टेम्पररी प्रोविजन है? Number 2, क्या आर्टिकल 367 को अमेंड किया जा सकता है to change the meaning of Constituent Assembly to now mean Legislative Assembly? Number 3, क्या प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नंबर 4, क्या जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट करता है इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? सो व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट? The Supreme Court upheld the abrogation of Article 370. They all agreed that Article 370 was a special and temporary provision and that Jammu and Kashmir had no internal sovereignty after accession to India. The special privileges given to Jammu and Kashmir was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. उन्होंने साइट किया महाराजा हरी सिंह के बेटे युवराज करण सिंह का एक प्रोक्लेमेशन विच वॉज इशूड इन 1949.
Proclamation के अनुसार the Constitution of India was to determine the relationship between Jammu and Kashmir and the Union of India, and it clearly indicated that Jammu and Kashmir merged into India like other princely states. This proclamation indicated that the provisions of Indian Constitution superseded and abrogated all other provisions which were inconsistent with it when it was in force in the state. On the question that whether the president can take actions which have irreversible consequences when a state is under president's rule, the court dismissed the contention by saying that challenging the exercise of president's power on the ground of reversibility would lead to challenging everyday's administrative actions which would result in a standstill administration. यहाँ पर कोर्ट cited the case of SR Bommai versus Union of India जिसमें define किया गया है the ambit of power that can be exercised during President's rule, and since SR Bommai judgment was given by a 9-judge bench, therefore it was binding on this 5-judge bench. The court upheld the validity of converting a state into a union territory, but cautioned that there may be negative consequences of diminishing the autonomy and not having elections or elected state government. The Supreme Court also upheld that there was no requirement for President to consult the Constituent Assembly of the Jammu and Kashmir after its dissolution. However, the court did find the procedure of first amending Article 367 in order to amend Article 370 as ultra virus. It cautioned that permitting amendments through such circuitous manner would have disastrous consequences in the future. The court also stated that Jammu and Kashmir's statehood should be restored as soon as possible, and elections to the Legislative Assembly of J&K should be held by September 30th, 2024. Justice S.K. Kaul mentioned the setting up of a Truth and Reconciliation Commission so that the affected individuals might reconcile with the past. Several legal experts and academicians have criticized the verdict on the ground that the court should have been stricter on the issue of backdoor amendments, as this might lead to problems in the future where all the governments would make such amendments which are constitutionally wrong just so to further their political agendas. This brings us to the end of our video. We hope that you got a clearer picture of what the entire Article 370 controversy is all about. If you enjoyed this video and found it helpful, please do like, share and subscribe this video on YouTube and follow us on Instagram. Thank you for watching this. I will see you in our next.